अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइरा नवाज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज। वजीर आजम और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दौरे सक्खर की खबर से सैलाब की तबाहकारियां और रिलीफ की सरगर्मियां कैसी चल रही हैं। मुतासिरीन की खबरगिरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस सक्खर पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का सक्खर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी काबीना के अरकान और अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी हमरा है। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया है, नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म और मुअज़्ज़ज़ मेहमान सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त बड़े पैमाने पर फंडिंग की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। सैलाब से अम्बात और इमलाक को नुकसान पहुंचने पर अफसोस है, लेकिन ये देखकर खुशी हुई कि तबाही के बावजूद पाकिस्तानी पुरुम्मीद हैं, पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती करते हैं। कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। It is difficult not to feel deeply moved when we hear such a detailed description of tragedy, of the loss of life, of the destruction, of the loss of property, of the loss of livelihoods. But listening to you, I see that there is no loss of hope. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। मामूल से कहीं ज़्यादा बारिशें हुई, 24 अजला शदीद मुतासिर हुए। ब्रीफिंग में उनका कहना था कि 3.5 मिलियन एकड़ ज़मीन पानी में डूब चुकी है। सूबे में 537 अफराद जाँ बहक हैं। In Jacobabad, we normally have 62 millimeters of rain in these 2 months. This year, in the months of July and August, we've had 783 millimeters of rain, almost 1300% more. 24 districts have been hit. There's water in 24 districts of the province, out of a total of 30. The 6 districts of Karachi, which we have not declared as calamity hit, also experienced, and I'll just tell you the numbers for Karachi. The normal rain in Karachi is 100 millimeters, and this year we got 1185 millimeters, so almost 11. सिंध भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हज़ारों अफराद बेघर हैं, सैकड़ों जान से गए हैं, माल मवेशी भी पानी में बह गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें, बागात तबाह हो गए। हज़ारों की तादाद में घर मलबे का ढेर बन गए। मकीन सड़कों पर खैमे लगाकर रहने पर मजबूर हैं। सिंध भर में सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। सैकड़ों गांव सफाए हस्ती से मिट गए। सेवन में मंचर झील से निकलने वाले ताकतवर रेलों से हर शय तहस नहस हो गई। मंचर झील से सैलाब का पानी दरिया सिंध में दाखिल होने लगा। भान सईदाबाद डूबने का खदशा। भान ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से शहर की बिजली बंद हो गई। 7 यूनियन काउंसिल्स कट देने और 2 यूनियन काउंसिल्स मंचर झील का पानी ओवरफ्लो होने से तबाह। देहात में पीने का पानी, राशन और कश्तियों की सवारी भी नापैद है। मुतासिरीन का इंतजामिया से सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा। सैलाबी रेलों के बायस 7 की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से ज्यादा देहात शदीद मुतासिर हुए। झील के पानी के दबाव के बायस टलटई के करीब इंडस लिंक सीम नाले में शिगाफ पड़ गया। कंबर शहदाद कोट से मंचर झील तक भी 150 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में कई फीट पानी जमा है। उधर खैरपुर, नाथन शाह शहर, तहसील वारा, सजावल और दादू की तहसीलें मेहड़ और जोही के सैकड़ों देहात जेर आब आ चुके हैं। मुल्क में बारिशें तो थम गई, लेकिन सैलाब की तबाही बर्बादी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में मजीद 3 अफराद सैलाबी रेलों में बहकर जाँ बहक हो गए। अम्बात की तादाद 270 हो गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलें कई मकानात और माल मवेशी बहा ले गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी लोगों की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई।
सैलाब से बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके खंडरात में तब्दील। लाखों घर सफाई हस्ती से मिट गए। कच्ची बस्तियां, गांव देहात पानी में बह गए। लोग बेयारो मददगार बेबसी की तस्वीर बन गए। बलूचिस्तान में मजीद 3 अफराद सैलाबी रेलों में बहकर जाँ बहक। अमवात की तादाद 270 हो गई। 166 अफराद जख्मी। सूबे भर में मवासाती निजाम दरहम बरहम। बिजली गायब, गैस का भी नामो निशान नहीं। ग़िज़ाई किल्लत और भूख से लोग बिलबिला उठे। सैलाब के बाद सिब्बी, झलमक्सी, खुजदार, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला का नक्शा ही बदल गया। जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान के नदी नालों में फिर तुग़यानी। डीजी खान, राजनपुर, तौसा, झंग समेत कोट चट्ठा में कई बस्तियां ताहाल ज़ेरे आब हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोहिस्तान, टांग, डीआई खान, करक और लकी मरवत में कई घर मलियामेट हो चुके हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों की जमा पूंजी, माल मवेशी सभी कुछ सैलाब में बह गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का हमारे, और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी औस्ता मोहम्मद पहुंचे हैं सैलाब से मुतासरा इस इलाके में। वो मुतासरीन से गुफ्तगू भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, जबकि इमदादी सरगर्मियों के हवाले से जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस औस्ता मोहम्मद पहुंचे हैं और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और बलूचिस्तान का ये इलाका जहां सैलाब से शदीद तबाही हुई है और वहां पर ये पहुंचे हैं और तमाम इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग भी हासिल कर रहे हैं। जबकि इस वक्त अब मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बराह रास्त मनाजिर हैं बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद से, जहाँ पर वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल UN मौजूद हैं और सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा कर रहे हैं। अहम खबर, सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ, बारिशों से होने वाली सैलाब की तबाहकारियों और उससे नुकसानात और उसके हवाले से इमदादी सरगर्मियों के बारे में जानने के लिए एंटोनियो गुतेरेस इस वक्त औस्ता मोहम्मद में मौजूद हैं और मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे, जबकि उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि क्या तबाही हुई है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। 70 people have perished in last 3 months. The rainfall started on 13th of June and continues until recently. 1.3 million people have been displaced. 185,000 households have been either completely damaged or partially affected. 500 livestock perished, 100,000 poultry have been killed. So a lot of infrastructure has been damaged. Bridges, one railway bridge also caved in. 900,000 acres of land has been affected, agriculture lands and orchards. So the government of Balochistan evacuated more than 125,000 people safely and reached to 1 million of people who were trapped because of the road disconnectivity. We provided almost 119,000 people, families with food packs. There is a gap of 66,000. 56,000 tents were provided. 129,000 tents are still a gap. Next. Because these districts, 5 districts we are here, these are completely inundated. Still the water is there in the fields, houses have been raised. So we even lost half of our healthcare facilities. So we have conducted emergency medical camps. 1,476 camps have been held in these 3 months and more than 353,000 people have been treated. At the same time, 540 veterinary mobile camps have been set up and more than 1.4 million animals have been treated and 829,000 vaccinated. Next. So now we briefly focus the 5 districts which have been completely inundated and where we are here. These are 2 slides pictorial. This is a rescue effort going on. These are the fields and these bridges and roads completely collapsed. This is the railway bridge which disconnected the upper Sindh with Quetta. So this bridge is under construction at Mach in Bolan Valley. And we had to rescue, we had to reach to the people through helis to supply food stuff. Excellency, we have prepared a brief rehabilitation plan. 185,000 houses badly affected.
and the joint survey by federal and provincial agencies is under process, will be completed in 2 phases by end of September and end of October. We estimate USD $245 million needed for reconstruction of those houses. And this rough estimate may increase. 9 lakh acres of crops have been completely damaged. Means I would say 0.9 million acres or 400 hectares of land, 400,000 hectares of land. So we estimated 30 billion rupees, approximately $130 million needed to rehabilitate those who have been completely affected by these. Excellency, we prepared a complete Balochistan rehabilitation package, and I'm not going into the details. We have this package needed USD 1.028 billion to completely rehabilitate the physical infrastructure, the health, vet facilities, schools, colleges which have been damaged, and the houses which have been damaged completely or partially. So way forward, this is the last slide. Excellency, Government of Pakistan and Government of Balochistan have been financing the rescue, rehabilitation, reconstruction phase, but the disaster is colossal, beyond comprehension and beyond the capacity of the provincial government. So we have requested approximately USD 1.028 billion from the federal government. UN OCHA has completed rapid damage assessment in 10 districts, and the rest of the districts are underway. And rehabilitation survey is also likely to be completed soon. Proper studies on climate resilient cities and infrastructure is the need of the hour, and effective coordination, proper management and transparency will be ensured. There is an urgent need to support from UN and donor agencies in the shape of grants, whether in cash or kind, because the people are waiting for their houses to be rebuilt where they can be settled. Thank you. एक्सीलेंसी, जैसे अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें जो हम पैदा किए हैं उसने हमारे ऊपर ये चीज़ें आई हैं, और ये सख्तियाँ कौमों के ऊपर आते हैं। हमें ये चीज़ें आए हैं, इंशाल्लाह हम तैयार तो नहीं है, लेकिन ये कि हम किसी के सामने ये नहीं कहें कि हमें पैसे दे, लेकिन जो अल्लाह ने लाया और उसको ज़रूर ज़रिया किसी को बना देता है, कोई भी ज़रिया बन जाता है। हम इस चीज़ के लिए Excellency, the Chief Minister is saying that this calamity, this challenge has come by the act of the nature, by God. But this has also offered opportunities. The challenges are colossal, and we have to respond with the help of the federal government and the donor agencies abroad. हेल्प तो अल्लाह करेगा, और ज़मीन पे जो ज़रिया बन जाए वो उनका नसीब, जो बना देता है अल्लाह खुद ज़मीन। Okay, God will help, and people would like to reconstruct and rebuild themselves. I may say something. Yeah. There is only one point I disagree. Yeah. You can translate. Yeah. एक चीज़ है जो मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता जो आपने I कहा। also believe in God. Yeah. No. But it was not God. It was the humanity. Yeah. Carbon emissions. Carbon emissions and Climate change. waging Global war on warming. nature. इंसान का And किया था the nature is किया तो striking हमने, back. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ही So it's the responsibility Is of on people. human beings. Agree. जो नुकसान हुआ है उसका हेल्प अल्लाह करेगा, जरिया कोई यूएन बन सकता है। God will help, but Yeah. UN or the federal government or the other Be the donor vehicle countries will be helpful. through which the people. Excellency, this is the largest province of Pakistan in terms of geography, in terms of population. But distances are very large, and remote areas, and to reach to those areas is a very, very difficult task. Whatever infrastructure they had, it's washed away. We just saw a railway bridge which was built during the times of British Raj. That's gone. And bridges, flyovers, I've seen myself touring all these areas along with the Chief Minister. It's been terrible here.
and they are all trying their best. They are trying to provide shelter, food, but this province, as I say, has lots of natural resources by the grace of God, but it lacks in terms of resources, in terms of finance and other resources, and we need to focus this province after Sindh very sharply. And in that, I think your interaction with the international community would be very, very helpful, because they have to travel long distances. Road is not available, communication is not available, transport is not available, and look at the flight. I think this province also needs equal attention, if not more. So we go to the affected families in the tents. Secretary General वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद में मौजूद हैं। होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। उनको बताया गया कि बलूचिस्तान में अमवात की तादाद 270 हो चुकी है, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है, ग़िज़ाई किल्लत ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बलूचिस्तान के 5 अजला में पानी ताहाल मौजूद है। मुतासरीन को रिलीफ दिया जा रहा है, मेडिकल कैंप्स में तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से फसलें तबाह हो चुकी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है और पुलों के टूटने से बलूचिस्तान का ज़मीनी राब्ता सिंध से मुनक़ता हुआ। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां थम नहीं सकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद पहुंचे हैं और वहां उनको ब्रीफिंग दी गई सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से, जिसमें उनको बताया गया कि यहाँ पर तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और 5 अजला हैं जहाँ पर ताहाल पानी मौजूद है और लोगों को मुश्किलात का सामना है, जबकि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है इन इलाकों से। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट।